Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss or we are going to explain the concepts of break-even point and shutdown point using a suitable diagram. Dear students, when we talk about the break-even point, in microeconomics, break-even point is said to occur when total revenue is equal to total cost. When total revenue is equal to total cost. यानी ब्रेक इवन पॉइंट को हम तब मेंशन करते हैं जबकि टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर होता है और वी मीन टू से दैट टी आर अपॉन क्यू इज इक्वल टी सी अपॉन क्यू मीन्स टोटल रेवेन्यू divided by quantity demanded is equal to total cost upon quantity demanded. Or we mean to say that, or we can say that P is equal to AC. P means price, A means average cost. So dear students, a firm is just covering all its costs. Now we discuss, you can see here on this figure, on x-axis we take output and on y-axis we take cost revenue in rupees. And dear students, this illustration is the situation of break-even point. And you see here that this point Q is break-even point. Break-even point is struck at the point Q where AR is equal to MR, or AR is equal to price, it is equal to price, or is equal to LQ, is equal to LQ, or dear students, it is OP, price is OP. A firm is just covering the costs or just covering the costs. Just covering the costs, as price is equal to OP happens to equal to AC. Average cost is LQ. Break-even point occurs at point Q. Here AR is equal to AC or TR is equal to TC. The firm is just making normal profits. So dear students, now when we discuss about the shutdown point. Now this figure, we have to change this figure, and here it is P and it is OL, and this is the price line. And price line is constant at everywhere. AR is equal to MR. Here, what is the shutdown point? Shutdown point is also one is this, and the another curve is this. This is AC, average cost, and this is average variable cost. And this is the point Q, which is called shutdown point. And we take on x-axis output in units and on y-axis cost revenue. So dear students, shutdown point occurs when a firm is just covering its variable costs only, or it is a situation when total revenue is equal to total variable cost. Total revenue is equal to total variable cost. In shutdown point, total revenue is equal to total variable cost, or we mean to say that total revenue upon Q is equal to total variable cost upon Q. So dear students, AR is equal to ABC. Here the firm is incurring loss of fixed costs. Does it mean that the firm will suspend production of the commodity? It may continue to produce because the loss of the fixed cost is to be incurred even when output is suspended.
Dear students, this figure illustrates that the situation of shutdown point is stuck at the point Q, where A or price, I mean to say price is equal to average variable cost is equal to angle Q is equal to OP. A firm is opening with a price just covering its average variable cost. Thus, price average revenue is equal to OP average variable cost LQ. When average revenue is equal to average variable cost, the firm is incurring the loss of the average fixed cost per unit of output. It is total loss is equal to total factor cost for a given level of output. Shutdown occurs at point Q. Here AR is equal to average variable cost. The firm is incurring the loss of the average fixed cost per unit of output. So dear students, total loss to the firm is equal to total loss to the firm is equal to average fixed cost into output, and that is equal to total fixed cost for a given level of output. So dear students, there are many illustrations or many examples for which we have to explain this break-even point or shutdown point. In short, this break-even point means that where total revenue is equal to total cost. When we say in short that what is this break-even point? Break-even point is where total revenue is equal to total cost, that is on point P, where the commodity in units or where the output in units is sold with the price of OP, and this point makes Q, and this Q point and this point Q is also called break-even point, and this point is when total revenue is equal to total variable cost, that is equal to shutdown point. बेटा अगर हम इस तरह से अब अगर मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हमने एक्सीज पर ब्रेक इवन पॉइंट में जब हमने एक्सीज पर आउटपुट लिया इन यूनिट्स में और ऑन वाई एक्सीज पे लिया हमने कॉस्ट या रेवेन्यू लिया इन रुपीज में, जबकि हमारा आउटपुट और जब हमारा रेवेन्यू जो है, जो हमारा प्राइस है, जब हमारा जितना जब आउटपुट और यानी जो हमारा आउटपुट टोटल कास्ट जो होता हमारा जो हमारा खर्चा आ रहा है किसी कमोडिटी के बनाने पर, यानी उसमें सब कुछ मिलाकर टोटल फिक्स्ड कास्ट मिलाकर टोटल वेरिएबल कास्ट को ऐड करके जब हमारा टोटल रेवेन्यू उसके बराबर आता है, यानी टोटल कास्ट के बराबर, तो उस दिन में हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया था कि जो पॉइंट क्यू जो है दैट शोज द ब्रेक इवन पॉइंट। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं शट डाउन पॉइंट की, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो टोटल रेवेन्यू होता है ये टोटल वेरिएबल कास्ट के बराबर होता है, और यहाँ पे मैंने बताया जो OL है और जो आउटपुट है OP जो प्राइस है, तो ये जो प्राइस सेम रहता है। और अब जहाँ पे ये OL इज इक्वल टू OP हो या यानी QL, तो उस वक्त जो है कि AR इज इक्वल टू AR मीन्स प्राइस इज इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कास्ट। अब शट डाउन पॉइंट में जब एवरेज वेरिएबल कास्ट बराबर हो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, तो तब तब जो पॉइंट हम यहाँ दिखाते हैं Q, दैट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। तो बेटा इसमें अब हम जब हम देखते हैं कि लॉस हो रहा है, किसी फर्म का लॉस हो रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा लॉस होगा किसी फर्म का,
तो उस वक्त जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है इनटू आउटपुट, दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो दैट इज इक्वल टू द गिवन लेवल ऑफ द आउटपुट। तो इस तरह से बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम एक नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ द मार्केट एंड द प्राइस डिटर्मिनेशन। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।